This session is being recorded, and this is Sir Sib Rahman. And in today's class, we are discussing past simple. Past simple talks about past. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सही सोचते हैं, लेकिन आपकी सोच में ये बात भी होनी चाहिए कि जब आप आगे जिंदगी में पास्ट सिंबल को पढ़ेंगे तो याद रखिएगा मेरी इस बात को। पास्ट सिंबल कैन टॉक अबाउट प्रेजेंट, past simple can talk about future. past simple present की बात भी कर सकता है और past simple future की बात भी कर सकता है। ये बात हम लोगों ने स्कूल लाइफ में नहीं पढ़ी। हमने सिर्फ यही पढ़ा था, थी, थे, माजी में कुछ किया था। दैट इज कॉल्ड Past simple. पास्ट सिंपल। लेकिन आज सर आपको क्या समझा रहे हैं पास्ट के हवाले से, गौर से बात सुनिएगा। माजी में आपने कुछ किया, समथिंग हैपेंड टू यू इन द पास्ट, समथिंग यू डिड इन द पास्ट, दैट इज कॉल्ड पास्ट सिंपल। शी कॉल्ड मी, यस, सारा कॉल्ड मी यस्टरडे। सारा ने मुझे कल फोन किया था। सारा डिडंट कॉल मी यस्टरडे। सारा ने मुझे कल फोन नहीं किया था। अगर आप affirmative sentences बनाते हैं, you normally use second form of verb, and when you talk about negative or questions, you normally use first form of verb. और did not के बाद आप सब जानते हैं कि इसके बाद हम first form of verb का इस्तेमाल करते हैं। When did you wake up? आप कब उठे थे? I woke up at 2:20. How did you learn English? आपने इंग्लिश कैसे सीखी थी? How did you get fluency in spoken English? आपकी अंग्रेजी में रवानी कैसे आई थी? I spend 5 to 7 hours every day for improving my language skills. How did you start your language academy? Um, I started my language academy by running Facebook ads, and with the passage of time, I give it my academy a name, and then everything I did with the passage of time. Main verb, as everybody knows, PT का मतलब होता है past tense, यानी कि second form of verb. PT stands for past tense. BFE stands for base form of verb, यानी कि verb की first form. अगर आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में मसला है कि इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, तो आप लाजमी तौर पर इररेगुलर वर्ब्स को स्टडी करें। इररेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? जिनकी सेकंड फॉर्म का इख्तिताम ईडी पर नहीं होता। इट इज वेरी सिंपल टू मेमोराइज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, लेकिन अगर आप इररेगुलर वर्ब्स को देखें तो शायद आपको थोड़ी सी परेशानी हो। देयर आर अराउंड 181 irregular verbs. You can easily learn them in 3 weeks if you learn 10 verbs every day. So in 3 weeks, you can easily memorize irregular verbs. And I have also provided you a list of irregular verbs in your notes, so you can also learn from there. Irregular verbs वो verbs होते हैं जिनकी second form का इख्तिताम ed पर नहीं होता, यानी कि जैसे go, went, gone, डू, डिड, डन, मतलब अब ईडी नहीं आ रही। वैसे तो हम ईडी लगा के सेकंड फॉर्म बना लेते हैं, लेकिन इररेगुलर वर्ब्स में ऐसा नहीं होता। उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, याद कर लें। अब आ जाइए पास्ट टाइम वर्ड्स। ये वो अल्फाज हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ प्रेपोजिशंस की जरूरत पड़ेगी, और वो प्रेपोजिशंस हैं इन, ऑन और एट। इसको जरा समझ लीजिए, कहां पर इन लगेगा, कहां पर ऑन लगेगा, कहां पर एट लगेगा, और कहां पर कुछ भी नहीं लगेगा। कोई सी भी आप सेंचुरी उठा लीजिए, कोई सी भी आप सेंचुरी उठा लीजिए, इन प्लस सेंचुरी, यानी कि इन 7th सेंचुरी, इन 8th सेंचुरी, इन 9th सेंचुरी, इन 10th सेंचुरी, कोई सी भी आप सेंचुरी उठा लीजिए, उससे पहले आप इन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से उसके बाद अगर आप देखें, इन प्लस ईयर, कोई सा भी साल उठाइए,
I got married in 2014. I was born in 1986. I completed my matriculation in 2001. I started teaching in 2004. I started teaching online in 2020. Next year, inshallah, I will complete 20 years of excellence. Then we will celebrate it online, right? At in plus month, koi sa bhi mahina, in January, in February, in March, in April, in June, in July, in plus season, in plus season, koi sa bhi aap season utha lijiye. In winter, in summer, in autumn, बस ये गुजरा हुआ होना चाहिए, सर्दियां जैसे गुजर गई. In winter, लास्ट विंटर भी कवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लास्ट विंटर. लेकिन जब लास्ट कवर्ड इस्तेमाल कर दिया, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी, तो फिर अब आपको इन लगाने की जरूरत नहीं है. लास्ट कवर्ड जो है कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता अपने साथ, अपने से पहले. इन प्लस पार्ट ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, एट नाइट. नाइट के साथ एट लगेगा, इन नहीं लगेगा. हाँ, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट आफ्टरनून, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, अब कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है. ऑन प्लस डे, अब डे से पहले क्या लगता है? ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे. आप सैटरडे को पार्ट ऑफ द डे के साथ भी मिक्स कर सकते हैं. ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन मंडे मॉर्निंग. आप मंथ के साथ ईयर भी मिक्स कर सकते हैं. इन जनवरी 1986. उसके साथ देखें आगे डेट आ रही है, ऑन प्लस डेट. अब आप डेट, मंथ और ईयर को भी मिक्स कर सकते हैं. ऑन 30th जनवरी 1986. आपने डेट भी बता दी, महीना भी बता दिया, ईयर भी बता दिया. आई स्टार्टेड टीचिंग on 1st June 2004. So next year, inshallah, in 2024, in June, I will complete my 20 years. And this year, in June, I will complete my 19 years of teaching experience. On plus event, on plus event. कोई सा भी इवेंट उठा लीजिए आप. On birthday, on Independence Day, on Valentine's Day, on Mother's Day, on Father's Day. हस्बैंड डे नहीं होता, वाइफ डे तो खैर उसका तो कोई दिन ही नहीं होता, रोज मनाना पड़ता है. तो वाइफ डे कोई सेलिब्रेट करता नहीं. यू हैव टू सेलिब्रेट इट एवरी डे. एंड हस्बैंड डे नोबडी सेलिब्रेट्स. But sister day is there, on sister day, brother's day, mother's day, grandfather's day, right? No husband day, no wife day. Every day is a wife day. At plus clock time. At plus clock time means at 7 o'clock, at 8 o'clock, at 9 o'clock. गुजरा हुआ वक्त है ये. आप जब इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो ये गुजरा हुआ वक्त होगा. अब एट 7 o'clock, ये तो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है. लेकिन जब ये पास्ट सिंपल के अंदर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? पास्ट टाइम वर्ड. आई कॉल्ड सारा एट 7 o'clock. आई कॉल्ड सारा एट 7 o'clock. एट मील टाइम. एट मील टाइम समझते हैं? मील टाइम आपके पास जो होते हैं, जैसे सुबह में आप लोग नाश्ता करते हैं. एट ब्रेकफास्ट, वी विल डिस्कस एट ब्रेकफास्ट. व्हाट डिड यू हैव एट ब्रेकफास्ट? एट ब्रेकफास्ट. एट ब्रेकफास्ट के बाद आपके पास आता है, अगर आप 12 बजे उठे, ना ब्रेकफास्ट का टाइम है ना लंच का टाइम है, तो ब्रेकफास्ट के बाद आता है ब्रंच. BRUNCH, ब्रंच. ब्रंच. व्हाट डिड यू हैव एट ब्रंच? क्या खाया तुमने ब्रंच पर? ब्रंच के बाद आता है लंच. सी यू एट लंच. लंच के बाद आपके पास आती है हाई टी. HI, हाई और टी चाय वाला, हाई टी.
हाई टी के बाद आता है सपर, SUPPER, सपर, सुपर नहीं है, सपर। सपर रात के खाने को कहते हैं जो आप लोग घर में खाते हैं, लाइट फूड। लेकिन हमारे यहाँ तो टिक्के और बिरयानी और निहारी चलती है। लेकिन गोरे के मुताबिक सपर इज अ लाइट फूड विच यू हैव एट योर होम, दैट्स नॉट योर डिनर। डिनर और सपर में क्या फर्क है? डिनर इज समथिंग विच वेयर यू आर इनवाइटेड समवेयर फॉर डिनर, which you eat outside the home, that is called dinner, right? तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, हाई टी, सपर एंड डिनर विच यू हैव आउटसाइड फ्रॉम योर होम। लेकिन हम लोग कहते हैं डिनर इज रेडी, तो यू बेटर से सपर इज रेडी, डिनर इज रेडी, सपर इज रेडी। अगर आपने किसी को इनवाइट किया अपने घर पर तो वो आपके घर से बाहर जाके कर रहा है, तो वो फिर यू कैन से डिनर इज रेडी। बट इफ यू आर सिंपली हैविंग योर मील सो एट होम, यू बेटर से सपर। बट सपर इज अ लाइट फूड। अब सपर में आप लोग निहारी खा रहे हैं तो वो वोकैबलरी का को तबाह कर दिया आपने। ठीक है ना, लेकिन है वो सपर ही। एट प्लस मील टाइम। अब आ जाइए अगो, बैक और लास्ट। अब देखिए गलती आप लोग करते हैं। 2 दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था, इसको इस सेंटेंस को ज्यादातर स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे? 2 दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू 2 days बिफोर। ये कॉमन सेंटेंस है या नहीं है? आई टोल्ड यू 2 days बिफोर। बिफोर का इस्तेमाल, बिफोर का इस्तेमाल, बिफोर का इस्तेमाल पास्ट सिंपल में जायज नहीं है। आप क्या कहेंगे? आई टोल्ड यू 2 days ago। आई टोल्ड यू 2 days ago। और 2 days ago गए या 2 days बैक? बैक का इस्तेमाल करेंगे, दैट्स अमेरिकन इंग्लिश, एंड इफ यू आर यूजिंग अगो दैट्स ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है ना? तो अगो का इस्तेमाल आपकी जबान पर ज्यादा होता है, बैक का इस्तेमाल कम है। आई कॉल हर 2 days बैक, सही है बिल्कुल। आई कॉल हर 2 days अगो, सही है बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह से लास्ट का वर्ड भी आपको पास्ट सिंपल में दिखाई दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट इवनिंग, लास्ट समर, लास्ट जून, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट सेंचुरी। तो इस तरह के जब भी कोई लास्ट का वर्ड आ जाए, आप उसको खामोशी से पास्ट सिंपल में ले जाएं। याद रखें, ये अल्फाज जो आपको मैंने अभी पास्ट टाइम वर्ड्स बताए हैं, ये पास्ट टाइम वर्ड्स जरूरी नहीं है कि पास्ट सिंपल में आए, लेकिन अगर ये आएंगे तो पास्ट सिंपल में आएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। मैं इसका रेफरेंस आपको फिर दूंगा आने वाले लेक्चर्स में कि मैंने आपको पास्ट टाइम वर्ड्स पढ़ाए थे। ठीक है, तो इसमें इन, ऑन, एट की गलती आप मत कीजिएगा। यू हैव स्टडीड preposition ऑफ टाइम इन प्लस सेंचुरी। देखें, इन 5th century इंग्लिश केम इनटू बीइंग। 5वीं सदी में अंग्रेजी वजूद में आई थी। In 1986, I was born. In 2004, I started teaching. I got married in 2014. We started learning English. You better know the month in October 2021. Sarah died in January 2014. They went to Murray in winter 2019. अब आप देखिए, आपके पास सीजन भी आ गया, ईयर भी आ गया, मंथ भी आ गया, ईयर भी आ गया, पार्ट ऑफ द डे भी आ गया। They called us in the morning. In the afternoon, she went to the market. At night, I watched a movie. He took a day off on Saturday. We started our language classes on 22 October 2020. He went on French leave on Friday. I gave her a ring on her birthday when उसको उसकी सालगिरह पे एक रिंग तोहफे में दी थी। So we started our class at 10:30. I took biryani at lunch. Sarah called me 2 days ago. मैंने बताया आपको, ago जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, back जो है वो अमेरिकन इंग्लिश है। Sarah called me 2 days back. They bought a car last January. She met me last Sunday. We had an ice cream last night.
अच्छा, अब ये सारी बातें हो गई। अब आप दो माजी की दो बातों को जोड़ना चाह रहे हैं। जैसे मैं सुबह 9 बजे उठा और मैं इम्तियाज सुपर स्टोर गया। आई गॉट अप एट 9 AM, फुल स्टॉप। आई वेंट टू इम्तियाज सुपर स्टोर। अब इन दो बातों को आप जोड़ना चाह रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए होगा? एक कंजंक्शन एंड। आई वेंट टू मार्केट। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप एंड लगा देते हैं तो आप दूसरे वाले वर्ब के साथ वो सलूक नहीं करते जो करना चाहिए। आप लोग लिखते हैं एंड बाय सम ग्रोसरी, तो एंड के बाद भी वही वर्ब आएगा जो आपने पहले इस्तेमाल किया। जैसे आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम ग्रोसरी, तो आपको दूसरे वर्ब को भी सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल करना है। आई वेंट टू अ टॉय शॉप एंड बॉट अ सिंगिंग डॉग, राइट? ये ध्यान में रखिएगा। तो पास्ट सिंबल की फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है? आपके साथ माजी में कुछ हुआ या आपने माजी में कुछ किया। बहुत कुछ आप लोग माजी में आप लोगों ने किया है। एंड मिस कोमल विल डेफिनेटली बी आस्किंग यू दीज डेज दैट आपने माजी में क्या किया। डिस्क्राइब योर स्कूल लाइफ, डिस्क्राइब योर कॉलेज लाइफ, डिस्क्राइब योर सिंगल लाइफ, डिस्क्राइब डिड यू एवर स्टील मनी। क्या आपने कभी पैसे चुराए किसी के? Did you ever steal money? Did you ever, were you ever caught red-handed? कभी आप रंगे हाथों पकड़े गए हो while doing something wrong? So share with us, right? Share your past stories with Miss Komal in your spoken class. I request you that use past simple as much as possible to get fluency in your spoken, because past simple enables you to speak a lot. Past simple gives you a lot of speaking opportunity, right? Share your past stories in your spoken class. माजी में मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, तो माजी में ऐसे ही गुजर गए मेरी जिंदगी के 30 साल आंखें बंद करके। If you are not willing to speak, you won't be able to have fluency. If you are not willing to speak, you must think of a topic and you must participate yourself. You must come up with your story, that I have a story today to share. I want to share a very funny story. Something happened to me, right? You went into a mehndi ceremony and some a little girl had a candle and she burned your hair. Did ever happen to you? Did ever happen to someone? Did you ever see this? I saw this. That girls were going in weddings in mehndi ceremony and everybody had candle. So there were some little girls and their mothers and elder young females, they were ahead. So young, always remember that kids should be ahead. But at that time kids were back because they wanted to look beautiful. That's why they put all the girls back. So what happened? That there was a lady, she had long hair, and there was a little girl, she had a candle. And I think there was an interaction between candle and hair, and she applied gel. And you know that the gel is very good fire conductor. So I still remember, like, her whole hair got burned, and the way she shouted, "Oh my God!" So the whole Mehndi ceremony turned into um, a very tragic event. I picked the flower on Monday, right? And then the gardener caught you. What are you doing? My nephew collected their toys in their childhood. Is my nephew collected or collected in a positive sense? If you are saying it's okay, collected there. Why are you saying there? Their neighbors' toys in childhood. Your nephew used to go and used to steal or collect some toys. This is kids' habit, but you must scold your kids in childhood. If you don't, then they will just become a shoplifter, right? Okay, yes, go ahead. I still remember, I will share you my so many stories that what things I stole in my past life. आगे चल रहा है, सेकेंड यूज पे भी डिस्कशन करनी है।
We can also use the past simple to say that, to talk about past states, माजी की ऐसी हालतें जो आपकी थी. जरा देखिए अपने आप को शीशे में जाकर देखिए आप कैसी थी और अब आप कैसी हो गई. मैं बहुत दुबली थी, अब इसका मतलब है ये जो हालत थी पहले थी आपकी. आई वॉज वेरी स्लिम, आई वॉज सिंगल. अब आप शीशे में देखते रहे और अपने आप को देखकर जुमले बनाते रहे कि आपकी हालत पहले कैसे थी, पाकिस्तान के हालात पहले कैसे थे. वी यूज वॉज वर हैड इन दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन के अंदर हम वॉज वर और हैड का इस्तेमाल करते हैं. वॉज वर फिजिकल कंडीशन, एज, लोकेशन और प्रोफेशन की बात करता है. बचपन की बातें याद करें, मैंने बताया था जिन्होंने नहीं डिस्कस किया था वो आज याद कर ले. आइल्स के स्टूडेंट्स अपने दिमाग में बिठा लीजिए. वी यूज वॉज वर व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल कंडीशन. फिजिकल कंडीशन से मुराद मैं खुद, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज सिक, आई वॉज टायर्ड, आई वॉज नर्वस. These are my physical conditions. I was 17 years old. I was 17. I was 17 when I started teaching. Age. I was I was in Karachi 5 years ago. Now I am in Abu Dhabi. जुमला है बेटा, you tension ले रहा. I'm in Canada. Again, it's a sentence. I was in London actually. Now I am in Peshawar. Sentence बेटा. ठीक है, हो सकता है पहले आप कहीं और हो, उसके बाद आजकल कहीं और हो. So where are you? I am at my home. I work from my home. I'm a freelancer. Right? Profession. I'm a teacher. I'm a language instructor. I'm an IELTS trainer. I'm PTE trainer. कोई आपका प्रोफेशन है, आप बताइए. सर आई वॉज. आप पहले क्या थी सोचे शादी से पहले. सर आई वॉज अ स्कूल टीचर. सर आई वॉज अ रिसेप्शनिस्ट. आई वॉज. पहले आप कौन से शहर में थी और अब आप कौन से शहर में हैं, बता सकते हैं. सर आई वॉज इन लाहौर. नाउ आई एम इन कराची. आप बता सकती हैं कि आपने कौन सा काम किस उम्र में शुरू किया. सर आई वॉज 17 when I started working. So when I was, sir, 24 when I got married. I was uh, I was 13 when I got an award from Japan. um, कल आप और पिछले हफ्ते आपकी तबीयत कैसी थी. सर आई वॉज वेरी टायर्ड. आई वॉज sick last week. I was very happy last week. Right? Anyone who wants to add a few sentences, please raise your hand and add a few sentences on past state. Sir, I was. I was. I was. I was. मुझे मेरे कानों में I was जाना चाहिए सर. I was और now I am. I was. I am. Yes, Aisha. I was. I am. Okay, sir. Yesterday I was in class, in ma'am's class, and today I am in your class. Yesterday I was in kitchen. Today I am in room. Yesterday I was at office. Today I was at home. Today. Yesterday I was happy, and today I am tired. Oh, that's great. That's great. Yes, Komal. I was a child. I used to go to my grandparents' home. When I was a child, I used to go my grandmother's home. Yes, that's very good. Yes, Leila. I was. Sir, Assalamu alaikum. Walaikum salam. When I was a child, I used to learn to listen a lot of fairy tales from my grandmother, and she was a humble lady. Sir, 1 minute. Okay. Manani. Bache. Yes. Yes.
Asma. Yes, sir. I was a senior supervisor in PTCL, but now I am a clinical psychologist in rehabilitation center. That's very good. Yes, Arzu. When my parents was alive, I used to visit every Friday, and today is my father death anniversary, and I'm very sad today because I miss him a lot in every moment of my life. अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी दरजात को बुलंद फरमाए और सबके वालिदैन जो जिंदा हैं उनको सलामत रखे, उनका साया हम पर सलामत रखे। जिनके नहीं है अल्लाह पाक उनकी सब तमाम वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। यस अलवीना। Yes, sir. I was a college teacher. Now I'm housewife. I was used to live in a village. Now I live in city. I was in Pakistan, and now I'm in UAE. That's very good. That's very good. Yes, Anmol. When I was in Multan at my mom house, I would like to go to KK Mart. I was fond of, मैं शौकीन थी, Fond of. I was fond Okay, of fond of. going outside when you were in Multan. Okay. Now you Okay. are in Ahmedabad. No, sir, Sydney. Now you are in Sydney. पूरी दुनिया से Yes, लोग sir. पढ़ रहे हैं माशाल्लाह हमारे पास। Yes. एक स्टूडेंट हमारी न्यूजीलैंड से भी पढ़ रही थी, न्यूजीलैंड यू उन्होंने लोग पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, राइट? यस फातिमा। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Yesterday I was ill, today I am good. Yesterday I was in kitchen for making tea, but I am in office. I was in museum, but today I am in park. Oh, that's great. That's great. Yes, Zarfi Shah. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Have I, I was what's your name? Zarafshin, sir. Zarafshin, sorry. Zarafshin. Yeah. I was lived in Karachi, but now I live in Islamabad. लिव हटा दे। I was in Karachi. Stative sentence है। मैं कराची में थी और अब मैं इस्लामाबाद में हूँ। I was in Karachi. Karachi. Now I am in Islamabad. I am is. Yes, sir. अभी मैं लिव को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, मैं आज यूज टू पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखिएगा किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? Okay, sir. दैट्स ग्रेट एवरीवन। आप लोगों ने अच्छे सेंटेंसेस ऐड किए, लेकिन अभी पार्टी खत्म नहीं हुई। अब एक स्टेट वर्ब आपके पास और भी है, और वो कौन सा है भाई? हैड। यानी कि कोई ऐसी चीज जो आपके पास थी, आई हैड अ कार्ड। कोई ऐसी बीमारी जो आपको थी, आई हैड फ्लू। कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो आपके अंदर था, आई हैड लॉन्ग हेयर, राइट? आई हैड ब्यूटीफुल आईज, स्टिल यू हैव। आई हैड कोई रिलेशनशिप आपका था, आई हैड सो मेनी फ्रेंड्स। कोई इवेंट जो आपका था, आपको याद हो, अब आई हैड वेडिंग एनिवर्सरी लास्ट मंथ, आई हैड एंगेजमेंट ceremony of my cousin last week. Nature, I had an iftar party also yesterday. कोई नेचर, कोई मिजाज आपका जो था और अब नहीं है। वैसे तो नेचर बदलती नहीं है, तो आप कह सकती हैं किस तरह की नेचर आपके पास थी, अगर आपको लगता है आपकी नेचर बदल गई है। Well, I had very responsible nature. When after getting married, now I am very irresponsible. Right? To make my wife responsible, I am very much irresponsible. Right? Ek sentence I was a student in Indus University. Now I am working in office as a graphic designer. Yes. अब तो नई चीज आ गई है ना, अब तो एवटार बन रहे हैं। आई एम वर्किंग ऑन इट, मतलब बहुत जल्द आप देखेंगे मेरा भी एवटार आने वाला है। आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आई है
Like you can introduce yourself with the help of avatar. By next Monday, you will see my avatar, inshallah. Right? I will be talking. मतलब अब आप किसी को पढ़ा रहे, आप अपना एक avatar बना दें और वो लेक्चर डिलीवर कर दें। आप देखिएगा कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी हो। यस, कोई चीज जो आपके पास थी, कोई बीमारी जो आपको थी, कोई आपके अंदर खुसूसियत जो थी, कोई रिश्ता जो था, कोई इवेंट जो था, कोई मिजाज जो है या था, raise your hand and add a few sentences. I had. आप इसमें was का भी एडिशन कर सकते हैं, when I was. Yes, Aisha. Sir, I had a master's degree in 2019, but now I have a MPhil's degree. Now you have MPhil's degree. Oh, that's very good. Yes, and what else? I had a good I had a good father, but now my father don't have with me. I had lovely, very lovable father, but now he is no more. Yes, sir. Okay. Yes, Laila. I had. Yes, sir. I had a car, but now I have another car. I have BMW. I had. Yes. But unfortunately, I haven't. Do you really have BMW? No, sir. Okay. I said, unfortunately, I haven't that. If you were Mariam Nawaz, you would have BMW. Oh, I don't want to be like Mariam Nawaz, sir. Okay. She's a nice lady. We can't be like her. Once upon a time. Yes. I was a student and When tuition. when I was a student, I had so many classmates. I had so many friends. Yes, sir. When I was a student, I had some tuition students. Okay, that's great. That's great. I had a flu last weekend. I had flu last week. Yes, sir. Because you had a lot of things at Aftari. That's why. Yes, sir. I had cooked a lot of dishes for Aftari. I cooked a lot of dishes for Aftari, and then I had also all of those dishes. Prepared some sweet dish. Okay. Thank you very much. अच्छा जी, माजी में आपके साथ कुछ हुआ या माजी में आपकी कोई ऐसी हालत थी, ठीक है बेटा? अब एक तीसरी ऐसी बात करने जा रहा हूं जो सुनने के बाद आप थोड़े से परेशान होंगे कि हमने तो पास्ट सिंपल को इस यूज में कभी नहीं पढ़ा. We can also use past simple to talk about past repeated actions which are now finished. माजी के कोई ऐसे काम जो आप लोग किया करते थे, माजी के कोई ऐसे काम जो आप लोग किया करते थे लेकिन अब नहीं करते. We can also use past simple to talk about past repeated actions which are now finished. माजी के कोई ऐसे काम जो आप किया करते थे लेकिन अब नहीं करते. लेकिन अगर आप पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप इन अल्फाजों का भी इस्तेमाल करेंगे. ऑलवेज, नॉर्मली, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन. याद करें, इन अल्फाजों को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स, जो आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल में स्टडी किए थे. याद आ रहे? मैं सुबह रोजाना 6 बजे उठा करती थी. अब आप यही सेंटेंस आई गॉट अप एट 6 AM एवरी डे, अगर आपने पास्ट सिंपल के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल किए तो ये आपको पास्ट रिपीटेड एक्शन की मीनिंग्स देंगे.
I got up at 6 a.m. every day. मैं रोजाना सुबह 6 बजे उठा करती थी. Sir Haseeb always taught us honestly. Sir Haseeb हमेशा हमें ईमानदारी से पढ़ाया करते थे. मैं आम तौर से स्कूल पैदल जाया करती थी. आई यूजुअली वेंट टू स्कूल ऑन फुट. आपको पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करना है और यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो आपको पास्ट रिपीटेड एक्शन की मीनिंग्स मिल जाएंगी. सारा हमेशा मुझे सुबह में फोन किया करती थी क्योंकि उसके अब्बा घर पे नहीं होते थे ना भाई होते थे, छोटा भाई होता था सिर्फ. सारा ऑलवेज कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग. बाज औकात मुझे नाश्ते भेजा करती थी. शी समटाइम्स सेंड ब्रेकफास्ट फॉर मी. प्यार अंधा होता है. अली ऑफन फॉट विद सारा, छोटा भाई उसका. अली अक्सर उससे लड़ा करता था, क्यों भेजती हो तुम इसको नाश्ते. लेकिन बस कोई प्यार करने वालों को रोक सकता है. बहरहाल then Sarah got married, I got married. It's not necessary to marry a person you love. आप बताइए बेटा, वो कौन से सेंटेंसेस है, वो कौन सी अमल है, वो कौन से काम है जो आप लोग किया करते थे. और लेकिन इसमें ये अल्फाज जरूर लगेंगे. सोचिए वो कौन से काम है जो आप रोज किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, बड़े हो गए आप. सोचे वो कौन से काम है, वर्ड बताएंगे वो कौन से काम है जो ये रोज किया करते थे. लेकिन एवरीडे का इस्तेमाल लाजमी होगा वर्ड और पास्ट सिंपल लगेगा. Yes, sir. When I was in matriculation, I had enough time and I played cricket every day. ये चीज I played cricket every day. अच्छा अब देखो, अगर एवरीडे को हटाना चाहो, तुमने अगर ये भी बोल दिया when I was 16 या when I was in a school I played cricket, तो भी आपके जुमले को यही मीनिंग्स मिलेगी, मैं क्रिकेट खेला करता था. आपने एक पास्ट टाइम रेफरेंस दे दिया तो भी पास्ट सिंपल चल जाएगा. when I was young I played cricket, इसका मतलब यही है कि मैं क्रिकेट खेला करता था. ठीक है. यस. नेक्स्ट आयशा. बस आज लग रहा है आयशा, लैला, कोमल पढ़ रही है क्लास में और आरजू बाकी सब सो रहे हैं. सोचे ना. Sir, when I was in college, I usually read novels. When I was in college, I usually read novels. जब मैं कॉलेज में थी तो मैं आमतौर से novels पढ़ा करती थी. जासूसी वाले? Which kind of? No, sir. Yes. Which kind of novels did you used to read? Sir, mostly I read Urdu novels like the writer's name like Humaira Ahmed and any other novels. Okay. I wish you had studied some English books, so you would be speaking English right now. Yes, हमारे यहाँ हमारे जहाँ नॉवेल का 3 मर्द 3 कहानियां वो एक आता था, खवातीन डाइजेस्ट. I remember I used to buy every month for my mom. She used to read it. I think she read it for almost 20 years. She stopped reading it, I think, for almost 10 years, but she read it for 10 years. I used to buy every month. And of every month it used to come and she used to read. And then people used to come that if you have read previous month digest, please give it to me. Then mobile phone came actually in life. That's why I'm thinking, why has she stopped? Then mobile phone came in life, telephone came in life. So the females had some other works to do. Yes, that was the reason that telephone came. So now the time which she used to have for free time, she spent on telephone. Then with the passage of time, that time converted onto internet. Right? So that's the problem. Now that's why we don't read now. If we did not have internet, if we did not have cable system, if we did not have telephone, we would be reading books like Akhbar-e-Jahan, Khawatien Digest, and some other stuff, newspapers. Now people don't read newspapers. Yes, Kadil, क्या किया करती थी आप? Sir, Sir,
when I was in college, I used to watch अभी cartoons यूज टू daily. पढ़ाया मैंने, अभी पास्ट सिंपल आपको इस्तेमाल करना है. Um, when I was in college, I watch cartoons every day. In college life, you watch cartoons every day, or in the school Yes, life? in college life. Oh, that's very strange. I watched Pink Panther and Mickey Mouse when I was every day when I was in the school. In the morning, I remember Pink Panther used to come at 7:30 on PTV. Yes, Alvina, क्या किया करती थी आप हमेशा? Yes, sir. When I was in college, I usually studied a lot. I usually studied a lot. मैं आमतौर से बहुत ज्यादा पढ़ा करती थी. Very good. फातिमा. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम. I always made painting every day, and my father taught me sketching as well as calligraphy. That's that's. Do you have this skill? Are you a Yes, sir. Yes, a little bit I have. little bit? Try to polish this skill. Teach this skill. Earn with this skill. Because I like very much. I had so many examples. Ah, that's a wonderful skill. You can earn a lot with this skill. Convert Okay, your sir. skill into your profession. Okay, sir. Inshallah, I will. Inshallah. Yes, yes, Komal. I often read the book. I usually, my mother always scold me when I used to tease her. Sometimes I help my mother. I usually went a park with my father. That's very good. Yes, Leila. When I was a child, I went to madrasa every day. That's good. When I was a child, I went to madrasa every day. Yes, Asma. When I was a child, I loved to spend my time on Yahoo Messenger to learn English language or to be fluent in Yeah. English language. On Yahoo skills. Messengers, we used to have different rooms as well as I remember. Yes, yes. Only to communicate, our feelings and our mindset with other people in all over the world. Yeah, all the time we had different platforms to socialize. I remember we used to have MSN Messenger. Yes, It was the first thing, and it was very famous. It got MSN Messenger, MSN ID, and then we had Yahoo, and then there was another famous socializing app, MIRC. It was Yes, sir. MIRC. It was very famous. People used to interact all over the world on that. Yes. Then Orkut came. Then High Five came. These were the websites which came for socializing. Then LinkedIn came, but then Facebook came, and Facebook removed everyone from the internet. Now everybody socializes with the help of Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube, TikTok. These are the apps from where people are sharing their feelings and themselves. And they are also earning. अच्छा भाई, अगली क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं? Past simple with structure. माजी में आप कुछ किया करते थे. आज मैंने पास्ट सिंपल पढ़ाया, लेकिन अब एक बच्चा मुझसे एक सेंटेंस पूछता है कि मैं क्रिकेट खेला करता था. इस जुमले को अंग्रेजी में कर दें, तो मैं ये नहीं कह सकता आई प्लेड क्रिकेट. इसका मतलब तो है कि मैंने क्रिकेट खेला था. लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो अब आप इस सेंटेंस को जनरेट करने के लिए यूज्ड टू की मदद लेंगे. यूज्ड टू का मतलब कोई काम जो आप किया करते थे, कोई ऐसी आदत जो आप में हुआ करती थी,
और आदत और काम के साथ हम इसके अंदर स्टेटिव सेंटेंस भी लेकर आएंगे। कोई ऐसी हालत जो आपकी हुआ करती थी, जैसे आप देखें शीशे में, आप कहेंगी पहले मैं दुबली हुआ करती थी, पहले मेरे बाल घने हुआ करते थे, ये स्टेटिव सेंटेंस आ गए। आई यूज टू बी, आई यूज टू हैव। आप कैसी हुआ करती थी अंग्रेजी के अंदर? आई यूज टू बी वीक इन इंग्लिश, आई यूज टू बी पुअर इन इंग्लिश when I joined SKH spoken English course. I used to be very weak in English, but now I am alhamdulillah very much good at English. Right? Used to के बाद इसका जुड़वा बहन आएगी be used to, कोई ऐसे काम जिसके आप आदी हो। ये भी कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। I am used to speaking English, मैं इंग्लिश बोलने का आदी हूं। मैं यहाँ पर ये जो आपको आईएनजी फॉर्म नजर आ रही है, मैं इसकी, ये बेसिकली नाउन है, तो मैं ये भी कह सकता हूं आई एम यूज्ड टू कराची वेदर, आई एम यूज्ड टू कराची ट्रैफिक, ये नाउन बना दिया मैंने। आई एम यूज्ड टू हॉट वेदर, मैं गर्म मौसम का आदी हूं। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन टुमारो सेशन, और कल आपका पास्ट सिंपल का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। एक असाइनमेंट नोट कीजिए, डिस्क्राइब योर स्कूल लाइफ। अब आप इसके अंदर पास्ट स्टेटिव वर्ड्स, आपको स्टेटिव सेंटेंसेस आपके सामने आ चुके हैं। वॉज वर का इस्तेमाल करें, हैड का इस्तेमाल करें, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करें। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। डिस्क्राइब योर स्कूल लाइफ, आस्क क्वेश्चंस अबाउट स्कूल लाइफ। अगर मैं आपसे ऐसे ही सवाल करूं, डिस्क्राइब योर स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ, डिस्क्राइब योर यूनिवर्सिटी लाइफ, ठीक है, इसमें बहुत सारे सवालात मैंने सोच समझ के लिखे। एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर क्लासमेट्स एंड मेक योर क्लास वेरी मच इंटरेक्टिव। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, वरना ये आपके नोट्स में भी मौजूद है, ठीक है। Inshallah, see you tomorrow, same timing, same channel. It's time to love you and leave you. Please join your relevant session with another link. Check your WhatsApp for that.